Hello everyone, welcome to Unacademy and welcome to this very special session on English vocabulary. One word substitution उठाते हैं. One word substitution तुमको पता होगा. We've already done a couple of sessions on YouTube and regular vocabulary से reverse approach होती है one word approach substitution में. Basically तुमको word की का meaning नहीं पूछा जाता, meaning पूछ के word पूछा जाता है. So it's a great way of making sure that you actually remember the words or not. कितनी बार एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि वी कम अक्रॉस अ वर्ड एंड वी डोंट रिमेंबर कि इसका मीनिंग क्या है. वी आर सो श्योर कि ये वर्ड पढ़ा है हमने, वी आर सो फेमिलियर विद द वर्ड, बट देन उसका मीनिंग हमको याद नहीं आता है. सो कहीं ना कहीं इट इज लाइक ड्यूरिंग द लर्निंग टाइम हमने शायद वर्ड को याद कर लिया होता है, वर्ड को अपनी मेमोरी में बिठा लिया होता है, लेकिन मीनिंग से उसका मैपिंग क्रिएट नहीं किया होता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू समटाइम्स क्रिएट कॉन्शियस कनेक्शंस बिटवीन वर्ड्स and their meanings through one or the other memory techniques. कोई गाना, कोई वर्स, कोई पिक्चर, कोई सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम मीनिंग याद रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने की बहुत कम टाइम में कोशिश कर रहे होते हैं, व्हाट हैपेंस इज, हाय इशिका, वेलकम. सो बहुत टाइम ऐसा ऐसा होता है कि वी काइंड ऑफ व्हेन वी आर ट्राइंग टू लर्न टू मेनी वर्ड्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, व्हाट वी इवेंचुअली एंड अप डूइंग इज वी रिमेंबर ऑल द वर्ड्स. उन वर्ड्स को इनिशिएट करने में, या फिर जैसे कोई वर्ड पहली बार सुन रहे हो तो उस वर्ड को पहली बार सुन के उसको मेमोरी में, उसको एक्सेप्ट करके मेमोरी में बिठाने में हम पूरी मेहनत कर देते हैं. उसका मीनिंग भी याद कर लेते हैं, लेकिन हमारे माइंड में कोई कॉन्शियस कनेक्शन नहीं होता बिटवीन दैट वर्ड एंड द मीनिंग. सो जिसने भी कभी कोई कॉन्शियस एफर्ट लगाया है वोकैबुलरी को अपने बिल्ड करने का, एंड देन ही काइंड ऑफ ही और शी इज सिटिंग इन एग्जामिनेशन जहाँ पे वोकैबुलरी पूछी जाती है या एटलीस्ट यूज की जाती है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन थ्रू दिस सिचुएशन जहाँ पे यू सी अ वर्ड, you remember the word, you are so sure कि तुमने इसका मीनिंग याद किया था, लेकिन still you are not able to remember what the meaning is. One word substitution is a great way of making sure that this happens to a very minimal, because ना सिर्फ तुम words से उनके meanings तक पहुंचने की practice कर रहे होते हो, you're basically doing कि तुम meanings से words तक आने की कोशिश कर रहे होते हो. तो not only from the forward but also from the back door, you're pretty much consolidating your knowledge of the vocabulary. चलो ठीक है. So I hope, hi Arpit. Sir, we've already started, Arpit. This, if you were listening, this was a part of what we are about to do. Okay, so chalo, let me pick up the first set of questions. I hope you can look at this. ये दिखाई दे रहा है. अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो just let me know. I will keep checking the packets at which जिस rate पे मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है. And if I'm like found to be correct, you might want to refresh your page every once in a while so that तुमको connection optimum मिलता रहे. All right. Okay. So to push out or thrust forth, what is the answer? Competent, irradiance, succeed, ligament, या protrude? The first question. Okay. कॉम्पिटेंट डेफिनेटली आंसर नहीं है. तो कॉम्पिटेंट ऐसे इंसान को बोलते हैं, ऐसी चीज को बोलते हैं हु इज वर्दी ऑफ अ कंपटीशन, या हु इज रेडी टू गो थ्रू अ कंपटीशन, हु इज एग्रेसिवली टुवर्ड्स अ कंपटीशन. सो कॉम्पिटेंट तो डेफिनेटली आंसर नहीं है. व्हाट अबाउट इररेडियंस? इररेडियंस का मतलब क्या होता है?
इरेडियंस इज बेसिकली किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जब रेडिएशन पड़ता है, सो उस यूनिट एरिया पे, फॉर एग्जांपल हर स्क्वायर इंच के ऊपर कितना रेडिएशन पड़ रहा है, दैट इज द वर्ड, जो कि दैट इज अ यूनिट ऑफ measuring how much radiation per square area of surface or any surface is receiving. So even that is not the answer. Succeed is definitely not the answer. Ligament भी तुम्हें पता है is like simply a connection between the bones and the muscles. So what about the last final answer? Protrude, protrudence, protuberance, तुमने word इस तरह के सुने होंगे. Let me show you the dictionary. Okay, I hope you can look at the dictionary. देख पा रहे हो. To protrude is to extend out in space, to bulge outward, to swell or protrude outward. सारे के सारे meaning fit होते हैं. So to push or to thrust forth, the answer is fifth, which is to protrude. What about beneficial? Which one of these is beneficial? Is it salutary, predicament, irreverential, fealty, या eminent? Beneficial. Yes, Arpit, you're right. I'm sorry, dictionary इधर लेके आओ. Which one of this is, एक बार guess तो मारो कम से कम. Beneficial का आंसर क्या होगा? Okay, देखो, salute से बना है salutary, and it basically means tending to promote physical well-being. Salutary is tending to promote physical well-being. ऐसी जगह, ऐसी setting, ऐसे terms, ऐसी conditions जहाँ पे healthy environment होती है, not just from like a very physical point of view, mental point of view, emotional point of view, वगैरह वगैरह. So salutary is something that promotes health. So that kind of sounds like the answer, but लेकिन इसको छोड़ के बाकी सबको एक बार देख लें. Maybe there's a closer option. Predicament. Predicament is a kind of a difficult situation. When you are in a predicament, you have something to solve, a situation from which extrication is difficult, जिससे निकलना मुश्किल होता है, फंसे हुए टाइप फील करते हो. That is a predicament. So that is definitely not the answer. I hope you get the connection. So not the answer. Irreverential. Showing lack or due respect, यानी कि जब reverence तुमने सुना होगा, is like an extreme level of respect towards somebody. So he reveres his family. So that's like extreme deep respect for his family. So irreverential is something that does not show the right amount of gratitude, respect या veneration नहीं show किया जाए. So like lacking that amount is irreverential. So again, that's nowhere that connects to the original word. Fealty is a kind of formal loyalty. जब एक king is basically asking its the surrounding areas, उनके जो भी इंचार्ज लोग हैं, उनसे ही basically wants to show के मुझे अपनी loyalty show करो, and like that you're under my banner. So that is fealty, is basically the loyalty that citizens or allies show to their country. तो country wise ज़्यादा formal type की loyalty होती है. Okay, so fealty again is not the answer, does not connect anywhere to the word. Eminent is like a high ranking, of a very high degree, of a very high quality, very sophisticated, topmost, elite. So the answer is again not eminent. हमने जैसा पहले सोचा था, the answer is salutary, and salutary is anything that promotes health. I suppose this is clear. I think, sir, there is a lag between live chat. Okay. Yes, there must be. थोड़ा होगा lag. क्या कर सकते हैं यार? कि keep. Why don't you keep refreshing? मैं बीच बीच में देख भी नहीं पाता हूँ, because like I have to like take care of multiple screens. So कभी अगर तुम्हारा comment मुझसे miss हो जाता है तो like forgive me. All right. Next.
The act or art of tracing or inscribing on surface letters or ideographs. Inscribing, वो खुरच खुरच के लिखने वाला जो होता है ना, when kind of you cut into something like wood, that's inscribing. So the act or art of tracing or inscribing on a surface letters और ideographs. क्या क्या letters या ideographs को किसी surface के ऊपर fit कर देना, that is to basically to writing, like a very too much definition for writing, right? हम writing के बारे में कभी सोचते भी नहीं है, उसका actually मतलब ये है. Okay, but maybe. What is a badger? A badger is an animal. Basically, it is a kind of it's a small carnivorous mammal. बहुत strong claws होते हैं, बहुत ज़्यादा like it's considered a very tough enemy when because it is like capable of pulling 10 times its own weight. किसी को badger करना एक verb भी होता है, किसी को annoy करना, irritate करना, that is to badger someone. Okay, so does that fit? आई डोंट थिंक सो. राइटिंग फिट्स, बट नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है राइटिंग की इतनी सारी इतनी बड़ी डेफिनेशन. डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ नहीं. इवन विद अ पेन यू हैव टू इंस्क्राइब, राइट? अगर तुम कभी ऐसा देखोगे तो व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स व्हेन योर पेन स्टॉप्स वर्किंग, सो देयर इज नो इंक कमिंग आउट ऑफ द पेन, but the pen is still inscribing what you're writing because of the pressure that you're applying to the surface. Oh, all right. What is decasyllable? इट्स काइंड ऑफ अ वर्स, अ पोएटिक वर्स, जिसके अंदर एक लाइन के अंदर 10 syllables होते हैं. दैट्स कॉल्ड अ डेकासिलेबल. सिंपली स्पीकिंग, डेका इज 10. Syllable is, you know, a combination of the sounds that you make, a vowel sound plus some consonant sounds. So for example, if I'm saying carrot, carrot has 2 syllables, and helmet again has 2 syllables. Surprise has 2 syllables again. Philadelphia, Philadelphia, so like 5 syllables. I hope तुमको समझ में आ रहा होगा कि syllable क्या होता है. Okay, badger आंसर नहीं है, decasyllable आंसर नहीं है. Reciprocity आंसर है क्या? Reciprocity का मतलब क्या होता है? The virtue by which things are like going and in exchange, यानी कि तुम मुझे कुछ कुछ दो, उसके बदले में I will give you something. Quid pro quo सुना होगा तुमने, something of that sort. So reciprocal, तुम नंबर सुने होंगे, that kind of cancel out a number. So reciprocity का मतलब होता है the property by which something is able to reciprocate or not. So again, not the answer. Intricate is very detailed, having many complex arrangements or arranged elements. I hope that's clear. तो आंसर क्या हुआ? राइटिंग की डेफिनेशन थी वो. The answer was 1. When the act of, or art of tracing or inscribing on a surface letters or ideographs. So the answer is writing. ओके. रेसिस. रेसिस किस चीज को बोलते हैं? किसी चीज से तुमने देखा होगा पुराने जमाने में वो दीवारें होती थी, व्हेन देयर जस्ट लाइक डिप्रेशन इनसाइड, जिसके अंदर मोमबत्तियां और दूसरा सामान, क्या बोलते हैं, चिराग, दिए, ये सब चीजें रखी जाती थी. समटाइम्स इवन आइडल्स. सो इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ शेप दैट वाज लाइक सेट इनटू द वॉल, एंड इट काइंड ऑफ एक तरह का ऑर्नामेंटल शेल्फ की तरह काम करता था. आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा. रुको एक मिनट. इफ यू वांट टू सी द फोटोग्राफ और समथिंग, लेट मी शो दैट टू यू. Are you able to see this? देखो, आई these are the like the recesses अंदर
like when there's a depression to keep stuff there. So all this like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 recesses and more here. So that is called a recess in the wall. Okay. So recess इनमें से क्या हो सकता है? Decameron. What is a Decameron? I have no idea. चलो डिक्शनरी देखते हैं. A Decameron is a collection of 100 tales by Italian author Giovanni Boccaccio. Okay. Like दूर दूर तक कोई relationship नहीं. What does it mean by agglomerate? Conglomerate सुना है मैंने. Agglomerate is to form into a cluster, to come together, amalgamate होके साथ में to form a cluster of similar things. Intermission का मतलब क्या होता है? Intermission is a kind of a break. The act of suspending an activity temporarily. Theater और movies में तुमने देखा होगा. There's something called as an intermission. So intermission is a kind of a break. And all right. What is an ordnance? Ordnance is military supplies. जो भी डिपार्टमेंट मिलिट्री सप्लाईज के लिए वेपन्स हैं, फूड है, प्रोविजन है, ड्रेसेस हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, दूसरे और गैजेट्स और आर्टिकल्स हैं, उनके सप्लाई के लिए जो डिपार्टमेंट या जो फैक्ट्री जो भी फर्म रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट्स कॉल्ड एन ऑर्डिनेंस. एंड व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टर? someone who explores an area for mineral deposits. A prospector is somebody who's basically ये बोल के भेजा जाता है कि भाई जाओ उस गांव में जाके देखो, there's a very good chance कि जमीन के नीचे there's a big aluminum reserves or any other metal. So इस तरह के मिशन के साथ, ये इस तरह की सिविल रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद, बिजनेस रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए कोई जाता है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टर. सो अ रेसिस is a decameron, an agglomerate, it's an intermission, ordnance, prospector. अब मीनिंग चूज कर सकते हो. हाय प्रीत, कैसे हैं आप? सो कैन यू चूज द आंसर नाउ? सारे मीनिंग बता दिए मैंने तुमको. इज इट एन इंटरमिशन? यस. गैप के लिए क्लोजेस्ट, बहुत अच्छा आंसर नहीं है. इट्स नॉट द क्लोजेस्ट वर्ड दैट इज पॉसिबल, but then out of Decameron, agglomerate, ordnance, prospector, intermission is the only word that has some meaning of the thing not being like continuous, or there being a gap, or there being a discontinuity in the way the surface looks. So not the Decameron, agglomerate, ordnance, prospector. Decameron किसी Italian poet से related है. Agglomerate was to bring together as a cluster or form a cluster. Ordnances सारी military supplies के लिए जो firm use and prospector is somebody who goes out and explores whether a certain piece of land has prospects of finding mining value. All right, चल, that was fun. Next set of questions उठा रहा हूँ मैं, right? All right. Visible? चल, बताओ आंसर. A body of sisters united by some border sympathy or by a religious vow. मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है तुमको कि इसके अंदर क्या है. A body of sisters. Sometimes they are real sisters, sometimes they're not sisters. They just call themselves by these sisters because जैसे brothers at arms होते हैं. So everyone who's like fighting in the same side in an army, उनको brother at arms बोला जाता है कि हथियार वाले दोस्त या हथियार वाले भाई. इसी तरह से sisterhood is like, sister is a very floating kind of a word. यहाँ पे sister का मतलब होता है like common grounds और common goals और common objectives वाले लोग जब एक साथ मिलके, so everyone is called a sister. तुमने सुना होगा missionaries में everyone is called a sister, like जितने भी female और जो women volunteers होते हैं उन सबको sister बोला जाता है. So all right, what is the word that fits? मुझे sisterhood सबसे अच्छा लग रहा है, लेकिन maybe I am wrong. Ingratiate का मतलब क्या होता है? Ingratiate is to gain favor with somebody by deliberate efforts. कोशिश कर करके अपना impression better कर करके उसका
कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करना, उसका फेवर जीतने की कोशिश करना इज टू इंग्रेशिएट. सिस्टरहुड मैंने तुमको बता दिया, इट्स बेसिकली सिस्टरहुड इज द स्टेट ऑफ बीइंग अ सिस्टर, या फिर द स्टेट वेयर अ लॉट ऑफ पीपल और लॉट ऑफ women with the same goal and the same mindset come together, and that's called, जैसे ब्रदरहुड होती है वैसी सिस्टरहुड हो जाती है. इट्स लाइक उस ग्रुप को भी सिस्टरहुड बोला जाता है. somnolence is insomnia. सुना होगा तुमने insomnia. सो insomnia में जो in लग के उसका negate कर देता है. somnia has something to do with sleep. insomnia का मतलब होता है जो सो नहीं पा रहा हो. insomnia को बोलते हैं जो सो नहीं पा रहा हो. insomnia is a state where you cannot sleep. Okay, somnolence is basically nothing but extreme deep heavy sleep. बहुत ज्यादा स्लीपी हो, तुम सो नहीं पा रहे हो और तुम्हें बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही है, दैट इज कॉल्ड somnolence. ओके, इम्परसुएडेबल का मतलब होता है जिसको तैयार नहीं किया जा सकता, जिसको परसुएड नहीं किया जा सकता, उसका माइंड मेड अप है, ही इज हार्ड हेडेड, यू कैन नॉट चेंज हिज माइंड. ओके, स्पूरियस इज ऊपर से दिखने में वैलिड, ऊपर से दिखने में एक्सेप्टेबल, लेकिन एक्चुअली में समथिंग विच इज नॉट प्लॉजिबल बट फॉल्स. प्लॉजिबल विच इज लाइक बिलीवेबल. ऊपर से तुमने कुछ बहाना बनाया घर पे जाके कि हमारे पापा नहीं समझ जाते थे कि हम बहाना जो बना रहे हैं वो अच्छा बहाना नहीं है. सो बेसिकली मैं कोचिंग से लेट आया एक बार, सो आई टोल्ड माय फादर दैट क्लास लेट हो गई थी. सो ही वाज काइंड ऑफ ओके, but then he didn't believe it. So that was like a spurious um, excuse from my side. So what is the answer here? Body of sisters united by some kuch. I don't think I have to guess anymore. Ingratiate, किसी के सामने अपना इंप्रेशन अच्छा करना is not the answer. Sisterhood is the answer. Somnolence is heavy sleep, sleepiness rather. Impersuadable, जिसको तैयार नहीं किया जा सकता. Spurious is ostensibly valid but actually false. So the answer is sisterhood. I hope it is clear. चल, व्हाट इज द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन. यार देखो, तुम लोग इसको नोटबुक में नोट कर रहे हो तो कोई मतलब है, अदरवाइज मैं सारे के सारे वर्ड्स बताने की कोशिश कर रहा हूं. अगेन, डोंट जस्ट सिट हियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज देन यू स्टार्ट गेटिंग डिसअपॉइंटेड एंड दैट इज व्हेन ऑल द लर्निंग स्टॉप्स. सी, एग्जाम सिर्फ एक है तुम्हारा, देयर इज ओनली वन टेस्ट एंड दैट इज क्लैट, और एनी अदर एग्जामिनेशन जो तुम दे रहे हो. उससे पहले पहले तुम जो भी कर रहे हो, whether it's a test, whether it's in the form of a quiz, whether it's no matter how it looks, you're basically doing this to learn. तो अगर तुम वहां पे रुक जाते हो कि अरे मुझसे सॉल्व क्वेश्चन ये आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं उसके बारे में बुरा फील कर सकता हूँ. इफ यू स्टॉपिंग देयर इज नो लर्निंग हैपनिंग. सो अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रखो, डिक्शनरी उठाओ. तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें से सॉल्व नहीं होंगे, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आने वाले हैं जिसमें जो तुम्हें पता नहीं होंगे. ये जानबूझ के किया गया है ताकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कुछ नए वर्ड सीख जाओ, एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू पेइंग अटेंशन टू द मीनिंग्स आई एम टेलिंग यू, एंड यू आर आल्सो नोटिंग देम इन योर नोटबुक, बिकॉज रिवाइज कहां से करोगे ना. ओके, ओके, द कॉल फॉर रेपिटेशन as of some part of play or performance. कभी नहीं होता था once more लोग चिल्लाने लगते हैं. So that is called is it called conjugate? Conjugate का मतलब होता है मिला हुआ. Conjugate any entity formed by joining two or more smaller entities together. A conjugate of the allies. मिलिट्री कॉन्जुगेट ऑफ द allies, यानी कि सारी कंट्रीज जो आपस में allies हैं उन्होंने अपनी मिलिट्री को मिलाया, they formed a collected army of the different allies, and that's called a conjugate army. It's basically a noun, and it can also be used as a verb and an adjective. Okay, what about appertain? Appertain का मतलब क्या होता है? A certain सुना होगा तुमने. So appertain का मतलब is to be part or an attribute of. So what does this piece of evidence appertain to? यानी कि to of what bigger whole this is a small part. Be a part or attribute, किसी चीज का characteristic. What do these feathers appertain?
कि there was a pigeon here, यहाँ पे एक कबूतर आया था, उसके पर देख के समझ में आ रहा है. So what does it point towards to? What is the bigger reality that this is a small part of, or this is a small clue of? This jigsaw puzzle होती है, every little part is kind of an apperton or two apperton. All right, it's a verb basically. Coalition again, joining together of coming together of forces, ये तो हमें पता है. Encore, yes, it's like N E से start हो रहा है, but it is pronounced encore. And encore are those exhortations when the public asks you, इतना पसंद आता है तुम्हारा performance that they want to like listen to it again. So it's like a very concerts वगैरह का बहुत regular feature होता है. Repeated performance को encore बोला जाता है. Alright. Transverse का मतलब क्या होता है? बचपन पढ़ा है तुमने? Geometry याद है? Extending or lying across, crosswise direction. तिरछे में किसी चीज को जोड़ लेना. At right angles to the long axis. So from the transverse halls in the stairway ascends gracefully is like just an example. Cross, to cross connection किसी चीज में, that's called a transverse. Just give me a second. All right. ओके, क्या कर रहे थे हम लोग? हाय राही, गुड आफ्टरनून. हाँ, ट्रांसवर्स बता रहा था मैं तुम्हें. देखो, ट्रांसवर्स बेसिकली जब तुमने ज्योमेट्री याद होगा, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में से एक लाइन निकल रही है. डू यू रिमेंबर एक ही प्लेन में होना चाहिए दोनों लाइन को? तो ये वाले एंगल्स को डू रिमेंबर दे यूज्ड टू बी लाइक द इक्वल एंगल्स. ये दोनों एंगल्स, डू यू रिमेंबर दैट ज्योमेट्री एटलीस्ट? इसको ट्रांसवर्स बोला जाता है बिकॉज it basically is cutting the lines across two planes. Okay, so that is a transverse. So joining line type of, so a call for repetition as of some part of play of performance. What is the answer? It's not conjugate. Conjugate का मतलब होता है the result of joining together two things. Not the answer. Appertain. Appertain is like to point out or to be a part of a bigger whole. Not the answer. Coalition again. साथ में मिल जाना, to join forces. Encore is, I'm so sorry, this is the answer, just discussed it. And transverse is a line connecting two points, right? So okay, evenness of mind or temper, equanimity, inveterate, surcharge, tortuous, या putative. What is the meaning? Yes, राही, sum of transverse angles is corresponding angles जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो सेम साइड के ऊपर एंगल्स होते हैं उनको दे आर लाइक टुगेदर 180 डिग्रीज. वेयर आर यू? हाँ, इवननेस ऑफ माइंड और टेम्पर, इक्वानिमिटी, साउंड तो कर रहा है उसमें, इक्वल दिखाई दे रहा होगा तुमको. इज इट द आंसर? Yes, that's the answer. Steadiness of mind. When you are like steady, you are normal. कुछ no funny hanky panky business going on with your head. So that is steadiness of the mind. So that is the answer. लेकिन बाकी सारे भी देख सकते हैं. Inveterate का मतलब क्या होता है? Habitual. So inveterate का मतलब होता है, so when somebody is, he is an inveterate smoker. So he kind of cannot help it, cannot control it, cannot even reduce it. He's simply completely hopelessly gone there. So inveterate is बहुत extreme level के ऊपर जब कोई चीज, कोई आदत पड़ चुकी होती है, that is called inveterate. Okay. What is a surcharge? An additional cost over something. किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी ऊपर से कॉस्ट ली जा रही है, जैसे कि पेनल्टी, टाइम पे बिल नहीं भरा, या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस मांग रहा है कोई. सो दैट इज ऑल कॉल्ड अ सरचार्ज. नेगेटिव कॉनोटेशंस भी होते हैं, रिप ऑफ, किसी को लूट लिया, ज्यादा पैसे ले लिए, इवन दैट इज अ सरचार्ज. व्हाट अबाउट torturous? Something that is so painful to go through that it seems like a torture, or it is actually torture. जब किसी को torture किया जाता है, तो the entire ordeal that the person is going through, उसको it can be called as torturous, right? Punitive is connected to any kind of punishments.
सो प्यूनिटिव कंडीशन, इम्प्यूनिटी सुना होगा तुमने, inflicting punishment, to give somebody punishment is punitive. Okay, punitive, so they're going to be punitive damages, यानी कि जो तुम्हें तुमने जो काम किया है उसके बदले में तुमको पैसे दे के अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी. So that's punitive. Not the answer, not the answer, not the answer. The only answer is equanimity. And equanimity का मतलब क्या होता है? Evenness of the mind और temper. बार बार गुस्सा नहीं होते हो, किसी भी चीज से affect नहीं होते हो. You are able to keep your head to yourself and use it in your own way. Having confidence, precocious, passable, deplorable, collier, reliant. मुझे राइट अवे देख के वर्ड फिफ्थ का, इसका आंसर फिफ्थ लग रहा है, रिलायंट. रिलायंट कम्स फ्रॉम रिलायबल, जिसके ऊपर भरोसा भरोसा किया जा सकता है, दैट्स अ रिलायंट पर्सन और somebody who's dependent. ओके, सो एक एक करके, लेकिन आई माइट बी रॉन्ग, मुझे लग रहा है मैं फॉर्म गलत समझ रहा हूँ. रिलायंट माइट बी दैट बी पर्सन हु इज रिलाइंग ऑन समवन. दैट इज अ मिस्टेक आई ऑफन मेक. अपनी गलतियां पता होना बहुत अच्छा होता है, सो दैट यू नो कि तुम्हें पहले से पता होता है किसी पिटफॉल में तो नहीं गिरने वाले हो. सो प्रिकॉशियस और इज अपियरिंग और डेवलपिंग अर्ली, जल्दी कोई चीज एक्सपेक्टेशन से पहले डेवलप हो जाती है, सो उसको बोलते हैं प्रिकॉशियस. ओके, प्रिकॉशियस. ओके, पैसिबल. पैसिबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज लाइक, give me a second, I don't really understand the meaning of this. Okay, so passible is somebody who is capable of experiencing emotion of any sort. इसको पैसेबल से कंफ्यूज मत होना. पैसेबल विच इज, ये वाले वर्ड की बात कर रहा हूं मैं. पैसेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल बट जस्ट सो, यानी कि मीडियोकर. Like, okay, it's like acceptable levels, that's all the level. So the report was, your report was passable, it was like okay, it was not something good, it was just okay. Okay, so ये वो वाला वर्ड नहीं है. पैसेबल इज केपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग इमोशन बट नॉट द वर्ड. डिप्लोरेबल. डिप्लोरेबल का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर समथिंग दैट इज वर्दी ऑफ ऑफ डिप्लोरिंग, जिसको हेट किया जा सके. सो नॉट द आंसर. व्हाट इज अ कोलियर? आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. A collier is somebody who works on a coal ship or a coal thingy जहाँ पे भी कोल का काम होता है. So that's like a coal mine, coal ship के ऊपर काम करने वाला is called a collier. What about the final word, reliant? Relying on another for support. मैंने बोला था ना. So having confidence. So somebody who has confidence will be willing to rely on somebody, right? अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं होगा तो तुम मेरी क्लास थोड़ी देखोगे बैठ के. So you're relying on me. So you're reliant on me for this particular, like for the like matter of discussion. So the answer to this is having confidence, reliant. Again, passable और passable के बीच में confuse मत होना. Superfluous. Okay. Okay, supernumerary is something which is like more than that is required. जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कोई चीज मिल जाती है तो that's called a state of supernumerary. ओके, कंट्री में तुमको पता है फेलो किसी जगह पे रहने वाले, तुम्हारी ही कंट्री के बिलोंग करने वाले सिटीजन्स को कंट्रीमैन बोल दिया जाता है. Supernumerary is basically abundance or surplus.
Okay, countrymen, you know what it means, but not the answer. Miscreant. Miscreant जो भी शरारती तत्व होते हैं, जो बेसिकली आर मिस्chievous, सो कुछ ना कुछ बुरी हरकतें करते रहते हैं, जिसको मॉरल स्क्रूपल्स नहीं होते, दैट इज कॉल्ड अ मिसक्रिएंट. ओके. व्हाट अबाउट लाउज, और इज इट प्रोनाउंस एनी डिफरेंट? इट्स प्रोनाउंस लॉस. लॉज. यस. सो इट्स काइंड बेसिकली लाइज सुना होगा तुमने. जू उसका सिंगुलर फॉर्म है. ओके. आइटिनरी. आइटिनरी का मतलब होता है एस्टैब्लिश लाइन ऑफ ट्रैवल. तुम पता हो मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, मेरी फ्लाइट मुंबई तक की है, मुंबई से आई एम गोइंग टू बी लीविंग फॉर यूरोप. यूरोप के इट्स लाइक when you have a list and clear cut map of कि तुम कहाँ कहाँ जाने वाले हो, that's called an itinerary. Okay. अब superfluous का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? मैंने शायद एक वर्ड को गलत जज आउट कर दिया. आई थिंक सुपर न्यूमरसी इज द वर्ड हियर, बट सुपरफ्लुअस और सुपर न्यूमरसी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. सुपरफ्लुअस इज ओनली व्हाट इज ऑन द सरफेस. सुपरफ्लुअस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा सर्फिशियल या सुपरफिशियल होता है. एंड सुपर न्यूमरसी का मतलब होता है समथिंग दैट नॉट ओनली फिट्स द रिक्वायरमेंट बट गोज ओवर दैट. आई होप इट इज क्लियर. सुपरफ्लुअस माइट हैव अ मीनिंग ऑफ कि जो रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी नहीं हुई, बेवजह ऊपर से सिर्फ दिखावा दिखावा हो रहा है. लेकिन सुपर न्यूमरसी में there's this condition when the requirement is fulfilled and yet you have more than that. So इसलिए मैं surplus word बोला था. But still, any word that comes even close to superfluous out of the list is super numeracy, and I think I should correct this. Okay, next set of questions उठाते हैं चलो. I know these words are difficult. I know, and ऑल्दो कोई लेवल जज नहीं कर सकता किसी चीज का कि क्लैट में क्या आने वाला है, बट आई हैव इवन आई हैव अ फीलिंग कि दिस माइट बी लिटिल मोर देन व्हाट यू काइंड ऑफ चूड फॉर. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज, क्या है यार, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दैट यू आर डेवलपिंग योर वोकैबुलरी. इसमें से अगर तुम्हें 50% वर्ड भी याद रह गए तो मुझे मेरा काम हो जाएगा. And development of vocabulary should not stop. You should keep doing it till the very last day. क्योंकि vocabulary का कोई syllabus नहीं है. It's a part of the vocab. जो भी तुम reading comprehension exercise है तुम्हारी, उसी का part बनेगा ये. So you don't want to stop. You don't want to. The moment you stop, तुम अपनी reading comprehension को stop कर लोगे. At least develop करना. So अपनी vocabulary को develop करते रहना till the end. दिखाई दे रहा है? Alright. To enlist men for military or naval service, whereupon recruit, retouch, masonry, disconnect. बहुत ज़्यादा easy words हैं. Whereupon is not the answer. Recruit is the answer. Retouch not the answer. Masonry not the answer. Masonry is like the art of making walls. Yes. Disconnect not the answer. I hope it is clear. Okay. A rising, soaring. A rising, soaring और climbing. A rising यानी an act of rising, an act of soaring, an act of climbing. A का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है. So temper, medial, anticlimax, tutorship, ascent. Again, tempter है, sorry वो temper नहीं. A person who tempts others, दूसरे लोगों को tempt करने की कोशिश करता है into sin, into bad activities. Satan is a great example of a tempter of humankind. Okay, so not the answer. Medial. मीडियल का होता है बीच बीच वाला, लाइक ऑन इन द मिडिल. ओके. डिवाइडिंग एन एनिमल इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स. तो तुमने शोल्डर की मसल्स के बारे में बात करो. सो यू हैव द एंटीरियर, यू हैव द पोस्टीरियर एंड यू हैव द मीडियल हेड. सो लाइक बीच वाला हेड जो होता है दैट्स कॉल्ड
this because which is able to divide in front and back. Okay, I hope it is clear. So that is, even that is not the answer. Anti-climax. Anti-climax is जो expected climax था किसी मूवी का, किसी प्ले का, किसी स्टोरी का, उससे अलग हटके कुछ हो जाता है तो उसको एंटी क्लाइमेक्स बोला जाता है. बट अगेन not the answer. Tutorship. Tutorship is like to be the tutor of somebody, tuitions किसी को to give out. Not the answer. Ascent is basically to rise, for something to rise, and that's the answer. All right. Next, one who owns, enjoys, or controls anything as property. One who owns, enjoys, or controls anything as property. ठीक है. So flexion is deviation. When you kind of deflection, basically वहीं से flexion निकला है. So deflection is to kind of deviate from the norm, aberration, abnormality, anomaly. ये सारे के सारे meanings हो सकते हैं flexion के. But I don't think that's the meaning. Adoration क्या मतलब होता है? Adjuration का मतलब होता है solemn and earnest appeal to someone to do something. Imploration. किसी के सामने implore करते हैं ना. To implore is to adjure. Okay. Possessor is somebody who possesses something. So again, not the meaning. Discernible, which is able to make out clear. Oh, your handwriting is discernible even while it was written in pencil 10 years ago. तो किसी पेपर के ऊपर 10 साल पहले तुमने पेंसिल से कुछ लिखा था, आज भी दिख रहा है. It is discernible. You're able to make out. Contemptuous. Oh, possessor है, मैंने आंसर ही भूल गया था. possessor आंसर होना चाहिए ना, बोलते भी नहीं हो तुम लोग. Okay, contemptuous is something which is insulting towards somebody else or something else. Not the answer. Adjuration is not the answer. Possessor, however, is the answer. इसी का मतलब तो होता है one who owns, enjoys, controls anything as property is a possessor. मालिक. Native. Native का मतलब होता है indigenous, किसी जगह का local. Analyst, somebody who analyzes, not the answer. Vitiate, to criticize harshly, not the answer. Abdomen, पेट को बोलते हैं, of the stomach, not the answer. Indigenous, as I just told you, यही वाला word use कर दिया था मैंने. Okay, that's the answer. What about privateer? इसका मतलब होता है somebody, a new officer. Private सुना होगा तुमने आपने. Saving Private Ryan, मूवी बहुत अच्छी मूवी है, you should watch that movie. A new recruit, a member. Fourth, yes, native is the answer. Privateer is simply a new officer in the army, especially in the army. Private बोला जाता है उनको. हमारे यहाँ जो recruit बोला जाता है जिसको, that's called a private in क्या बोलते हैं in US and UK. The answer is indigenous. Yes. Characterized by irreverence or irreligion. Irreverence याद होगा तुमको, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था. Do you remember? I revere, he reveres his family. Irreverential एक word किया था हमने. Do you remember the meaning? Okay, I'll make you go through us like very quickly. We'll revise all that we've done. Hi guys, sir, कैसे हैं आप? आ गए आप? Where have you been? Okay. So recrudescence का मतलब क्या होता है? Recrudescence is basically to something for something to resume after there was a break. So abatement पीछे चला गया था, कोई चीज काम रुक गया था, retreat हो गया था, लेकिन recrudescence का मतलब क्या हुआ? To kind of continue back, to resume it back. So एक मिनट, मुझे शायद इसको नीचे ले जाना पड़ेगा. Yes, I'm so sorry. Okay, recrudescence is to resume again, to continue again. So इसका कोई relationship है reverence religion से? I don't think so. Impious. Pious या piety सुना होगा तुमने?
जब कोई बहुत ज्यादा धार्मिक होता है तो उसको बोलते हैं he's a very pious man. Piety is the state of being pious. Impious is उल्टा pious का. So अधर्मी को impious बोला जाता है. Characterized by irreverence and irreligion. Yes, that is the answer here. Hydrous is anything that has water, not the answer. Converge is to come to at one single point. Elizabethan का मतलब होता है क्वीन एलिजाबेथ के रेन के टाइम पे जो भी कल्चरल ज़ाइडगाइस्ट था, जिस तरह की लैंग्वेज थी, जो चीजें की जाती थी, कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशन थी, दैट्स कॉल्ड एलिजाबेथन. ओके, नॉट द आंसर. द आंसर इज सेकंड. टू प्रोक्लेम बाय आउटक्राई. आउटक्राई का मतलब क्या होता है? चिल्ला चिल्ला के बताना ये मेरी चीज मेरी है. लाउड अटरेंस, किसी को क्लेम करना, यू कॉल लाइक, वो क्या होता है? व्हाट इज दैट गेम दैट किड्स प्ले दीस डेज व्हेन दे सी समथिंग एंड दे वांट टू हैव इट फर्स्ट, दे कॉल इट शॉर्ट्स बाय कॉलिंग आउट समथिंग. डिब्स. यस, दैट्स लाइक प्रोक्लेमिंग बाय आउटक्राई. बेस्ट एग्जांपल, डिब्स. ओके, सो अनगेनली का मतलब क्या हुआ? is lacking grace in movement. Ungainly is crude, not refined at all. So ungainly, which is not likely to gain people's confidence. Okay, conciliate. किसका मीनिंग बता रहा? conciliate का. Okay, देखते. Conciliate is to kind of be inclined towards something. तुमने reconciliate सुना होगा, जो वापस दोस्ती करा देना किसी चीज के बीच में, दोनों को पॉइंट्स को अग्री करा देना. To come to terms is to conciliate. Okay, but then that's not the answer. Gratification, to proclaim by outcry. Gratification is the answer. Okay, let's see. Gratification is basically the state of being satisfied or gratified. तुमको भूख लग रही थी, कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा था, तुम्हें कुछ स्पेशली कुछ बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने का दिल चाह रहा था, एंड व्हेन यू सब छोले खाने को मिल गए तुमको, या कोई और दूसरी चीज खाने को मिली, सो यू फील ग्रेटिफिकेशन. ओके, आई डोंट नो हाउ that's the answer, but all right. Brusque is my rude or like peremptory shortness. Somebody who's like जानबूझ के सिर्फ rude होने के लिए he's short, and then उठो जाओ, something of that sort. So that's, yes, brusque. Blunt in a way, hurtful. Okay, bawl is to cry, like a raucous noise type. Cry loudly, जिद करने के लिए. And do you समझ में आई बात? Do you see what's the answer here? A bawling baby, जो जिद करता है वो बच्चा, मुझे नहीं चाहिए चाहिए चाहिए. That's the answer. आई बात समझ में? हो गए वर्ड सारे के सारे? हैव यू लाइक अभी डन योर? तो चलो, मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड. चलो, लेट्स गो थ्रू एक साथ सारे वर्ड्स देख लेते हैं एक बार, एंड देन वी विल. डिड आई जस्ट डू? Okay, so we did competent, irradiance, succeed, ligament, protrude. I just want you to go through the words. मैं तुम्हें बार-बार अब मीनिंग नहीं बताऊंगा. Again, this is the first page. This is the next one.
हमने जर्नी वाला वर्ड छोड़ दिया शायद 10th वाला, इसको भी कर लेते हैं एक बार. द लास्ट वन, अ जर्नी इज डाइवर्स, एनालिस्ट, रिस्पोंडेंट, एक्सकर्शन, बैजर. डाइवर्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. An analyst is simply again some person who analyzes. Respondent is somebody who responds in return of a question or a questionnaire or an interview. Excursion is a kind of an activity that has an outside component of outside travel. So that's the answer. And badger तुम्हें already पता होगा. To badger is to annoy somebody, or that's that mammal which has a lot of strength, that's capable of carrying out 10 times its more weight or its own weight. Is it lagging? Yes, बीच में lag हुआ था. अभी ठीक है लेकिन. ठीक है, बात समझ में आ गई. चलो अब मुझे दो तीन चीज केवल, लेट मी काइंड ऑफ रिमाइंड यू ऑफ. नहीं, एक पेज और था. ठीक है, चलो रिवीजन टाइम. अब अगर तुम्हें वर्ड्स याद हैं तो यू शुड बी एबल टू, मैं तुम्हें चलो पहले सेंटेंस लिख देता हूँ. लेट मी देन आई विल काइंड ऑफ. क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे. चारों पांचों के पांचों ऑप्शंस जो क्वेश्चन नंबर 5 में थे, इस क्वेश्चन के लिए भी वही, इस सेंटेंस के लिए भी वही ऑप्शंस है. क्वेश्चन नंबर 5, आज हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के सारे ऑप्शंस इसमें, उनमें से कोई एक वर्ड इसमें फिट होगा. पीपल, आर यू सॉल्विंग दिस? हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके सारे ऑप्शंस जो हैं वो इस सेंटेंस के ऑप्शंस मान लो एंड गिव मी द आंसर. राही ऑप्शन बता दिया मैंने तुमको. चलो ये लो, दीज आर द ऑप्शंस. दे रहे हो आंसर? ओके, आई विल गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Beautiful, Masin. Extremely correct. Completely correct. Yes, he is impersuadable to the extent that our entire family was unable to convince him. इसका भी बता दो, इसके लिए ऑप्शंस दे देता हूं मैं तुम्हें, रुको. These are the options. सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए था कि तुमने जो किया है वो कितना याद है तुम्हें, बस दैट्स इट. आज हमने कुछ नए वर्ड्स पढ़े, वो याद हुए कि नहीं हुए? बाय क्या सर? ओके, यू डिसाइड द आंसर. ठीक है, चलो. सो हैव अ कपल मोर मैसेजेस फॉर यू. टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो मेरा. क्यूआर कोड यहाँ पे रहा, सेलफोन से सीधे स्कैन कर लोगे, वहीं पहुंच जाओगे. अदरवाइज ये लिंक भी रहा, ये सिर्फ इसलिए ताकि मेरी क्लासेस का शेड्यूल तुम्हें पता चल जाया करे. सो यूट्यूब के ऊपर सेशंस लेने के बाद, स्पेशल क्लासेस को एक्सपीरियंस करने के बाद, नाउ यू नो व्हाट्स व्हाट, राइट. एंड नाउ जब तुम सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हो तो आई शुड टेल यू कि आइकॉनिक का ऑप्शन भी है, जिसमें तुम्हें इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है फैकल्टी से. इसमें इट्स लाइक समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. सो 18 मंथ्स, सॉरी 18 सेशंस इन एवरी 3 मंथ्स एंड सो ऑन सो एंड सो फोर्थ. तो अब जो लेफ्ट के ऊपर है आइकॉनिक प्राइसिंग है, राइट में प्लस की प्राइसिंग है. तुम्हें जो लेना है वो तुम खुद खरीद सकते हो. दो चीजें याद रखना, एक लंप सम में लेने की कोशिश करना. 4 महीने लेना है तो एक साथ 4 महीने ले लो. एक एक महीने करके खरीदोगे तो अननेसेसरीली 3 गुना ज्यादा महंगा पड़ेगा. मेरा कोड याद रखना, AA001. बाद में नहीं तो अखरती है ये 10% बहुत ज्यादा. एंड देन पीपल ट्राई टू काइंड ऑफ पोस्ट buying their subscription, they try to get a 10% discount. Doesn't work out, the system doesn't accept. अगर अपना खुद का मेंटरशिप डिजाइन करवाना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लो एंड फॉलो द प्रोसीजर 1 through 5. सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर लो. वैसे भी कोई डाउट है, अनअकैडमी पे कुछ भी चल रहा है जिसकी डिटेल्स जानना चाहते हो, इस नंबर पे कॉल कर लो. अगेन रिमेंबर माय कोड AA001. Now you have something called a Smash of Week, Doubt Week, and this is like an all-week doubt clearing session. So today is the 3rd day, rather the 4th one. Logical reasoning है आज 10th of March. Make sure that you अभी तक अगर यूज नहीं किया तो इससे पूरा बेनिफिट लेने की कोशिश करो. कपल ऑफ बैचेस वर्थ मेंशनिंग. सो एडुकेटर क्यूरेटेड टेस्ट्स फॉर क्लैट हैपेंस एवरी like weekday, यानी कि मंडे से फ्राइडे, 20 minutes, that's it. So again, a few batches, all India CLAT mock test series batch, preparation batch for 22 aspirants. All NLU alumni specific batch है, March 9 से start हो चुका है. Let's crack CLAT is 23 aspirants के लिए, and it has already, it'll start from March 11th. Rank booster advanced batches like 20, 20, 22, 23 advanced students के लिए. Again, it has started in March of, it'll be starting March of 11th, and Vaibhav is going to be kind of talking to Dev, who's one of the toppers, and on 12th of March, 7 p.m. Make sure that you get the details and are a part of this. ये तुम्हारी टेंटेटिव डेट्स है आगे कुछ एक्चुअल एग्जामिनेशंस की, नॉट मॉक्स बट एक्चुअल एग्जामिनेशंस. सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन लाइक प्लान अकॉर्डिंग योर स्टडी अकॉर्डिंगली. मार्च मंथ में होने वाले दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए भी कैलेंडर ब्लॉक कर लो. ऑलराइट गाइस, कंटेंट में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट, इनसेंसिटिव, इनएक्यूरेट नजर आया तो उसे शेयर कर लो. And Bugs Bounty allows you a prize every time you do that correctly. For us, the content becomes more refined, better. Alright guys, so I hope the video was liked, and isko agar, if you like the video, please like the video and share it around. तुमने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. Again, on the top left corner is the QR code to my Telegram channel. If you want to join it, scan it. I will keep these discussions happening. बहुत जल्दी मिलते हैं. Probably आज कोई YouTube session नहीं है. I just have a 2 o'clock session in the Plus course. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जो हमारा काफी टाइम से एक कोर्स चल रहा है, बी आर पार्ट ऑफ इट इफ यू फॉर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर. ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू अराउंड. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. मासिन, यस आई थिंक इट वाज ऑप्शन 3. देखें एक बार. यस, यू आर राइट.